हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस साइकिल के बारे में। बिजनेस साइकिल क्या होता है, क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, क्या इसमें कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं, हम सभी एक एक करके समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The business cycle is essentially an alteration between the phases of expansion and contraction. Let's break it down into different phases one by one. Phase of prosperity. In the phase of prosperity, the economy expands and the new businesses comes up. In this phase, businesses produce more, people spend more, and the economy takes an upswing. It's a positive, growth-oriented phase, and we see that the number of employment is increasing and investment shoots up. We reach at a peak, but what goes up must come down. So after the economy reaches its peak, the downfall starts, which results in the phase of recession. रिसेशन का जो फेज होता है वो बिजनेसेस के लिए काफी चैलेंजिंग होता है. बिजनेसेस फेस अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन अरेंजिंग द फाइनेंस फॉर देयर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड customers also shrink their expenditure, so businesses find it difficult to sell their product. So there is no single reason why this recession comes up, but there can be various factors like rising interest rate, lack of aggregate demand, etc. This is when we start seeing slower growth, and some businesses may face difficulties staying afloat. If the recession continues for a sustained period, then the next phase comes in, which is phase of depression. अगर recession का phase 3 quarters तक लगातार इकोनॉमी में रहता है, then we say that depression has set in. फेज ऑफ डिप्रेशन में हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि लोगों की जॉब्स जा रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया है, गवर्नमेंट को भी डेफिसिट बजट बनाना पड़ा है. इस तरह की चीजें अक्सर हमें डिप्रेशन में देखने को मिलती है. लेकिन बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात होती है कि वो गुजर जाता है. तो जब इकोनॉमी अपने लोवेस्ट पॉइंट, जिसे हम प्रो कहते हैं, प्रो पर पहुंचती है, तो उसके बाद वो रिकवरी के फेज में एंटर करता है. सो द नेक्स्ट फेज इज फेज ऑफ रिकवरी. रिकवरी के फेज में बिजनेसेस फिर से ग्रो करने लगते हैं, नए बिजनेस आने लगते हैं. इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प द इकोनॉमी टू रिवाइव एंड ग्रो टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट. आफ्टर रिकवरी द नेक्स्ट फेज कम्स द फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट phases of business cycle, and now we'll talk about a few key characteristics of business cycle. So first one is business cycles have wave-like movements. They go up and down. Second, these fluctuations are recurrent in nature, which means they repeat again and again. Third, these cycles are unpredictable. We cannot exactly pinpoint when the peak or trough comes in. Fourth, during each phase, all the economic indicators like income, output, price level, etc., they all move in the same direction, which means they all are synchronized. And finally, there is always a long-term growth trend in the economy. However, the cycle keeps repeating it. So that's the business cycle, its phases and characteristics. ये काफी important topic है जो economy की running को समझने में हमें help करता है. So I hope you have understood the concept of business cycle. For more such informative videos on economics, do follow us on Instagram. Don't forget to press the bell icon. Stay tuned for more such videos. Thank you for joining today, and I will see you in our next class.